Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, now we will discuss about the process of transcription. In the previous video we discussed about the types of RNA polymerase, their structure and about the transcription units. Now let's discuss the actual process of transcription or how it happens. This process is different in the case of prokaryotic and eukaryotic cells. But here basically we will discuss the basic process of transcription and then we do the comparison of both in eukaryotic and prokaryotic transcription also. So first of all, before starting the actual process of transcription, we need to understand that what are the requirement for this process. किन किन चीजों की जरूरत होती है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर. So first thing that is very commonly understood that it is DNA segment. First thing that is required is the DNA segment which need to be transcribed in the form of mRNA. Second thing हम बोल सकते हैं that is required is RNA polymerase enzyme. That is very important enzyme which starts or which do that transcription process. And the third, ribonucleotides, and the fourth one is the some metals ion like magnesium and manganese ions. These are the some important requirements for the transcription process. So this process is divided into the 3 steps. So that we can easily explain, we are dividing these process into the 3 steps. First is initiation. First step of this process is initiation. Second is known as elongation. And the third step is known as termination. So these are the 3 steps in which the complete process can be divided: initiation, elongation and termination. Let's start with the initiation. Initiation means शुरुआत करना. So this is the process when the transcription is initiated or started. For the initiation, the promoter sequence is present. At the promoter sequence, the RNA polymerase get binded at the promoter site to initiate the transcription process. But the important thing is there, with the promoter, the sigma subunit should be there. So this is the complete DNA segment which you can see here. This is the DNA segment which has 2 strands, 3' to 5' and 5' to 3'. This is the 3' to 5'. This blue color strand will work as in a template strand. ये template strand की तरह काम करेगा because it has 3' to 5' polarity. It will be the template strand. And at this complete DNA segment, it has a promoter sequence at its particular position. यानी कि initially हम देख सकते हैं कि यहाँ पे particular sequence होगा, promoter region होगा, and at this promoter site, that will be the AT rich region. इस promoter site पे आके सबसे पहले bind होगा RNA polymerase enzyme. और RNA polymerase भी तभी प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएगा जब उसके साथ सिग्मा subunit bind हो जाएगी. So here, then for the initiation of the transcription process, what is required? Promoter site is required, and at the promoter site, the RNA polymerase should be bind with the sigma subunit. सिग्मा सबयूनिट का काम सिर्फ प्रोसेस को इनिशिएट करवाना है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएटिंग और इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. When all these things started or all these things get attached, the process is started. Process can initiate. Transcription process start हो जाएगी. Once the process is started, this sigma factor will separate from the RNA polymerase. जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगी, सिग्मा का कोई रोल नहीं है, तो सिग्मा जो सबयूनिट है, ये सिग्मा जो फैक्टर है, इसे हम फैक्टर भी बोलते हैं. This sigma factor can fall off. It can released from the RNA polymerase. And after that, RNA polymerase separate do the transcription. Here you can see that there is no enzyme is required for opening the DNA. यहाँ पे DNA हेलिक्स को खोलने के लिए किसी पर्टिकुलर एंजाइम की भी जरूरत नहीं है. ओपनिंग का काम भी RNA polymerase ही कर रहा है. It will open the DNA segments and then it will form a new mRNA. So यहाँ पे हमने देखा इनिशिएशन जहाँ पे RNA polymerase bind हुआ है सिग्मा के साथ, and after that it sigma subunit is released. Now next you can see that this is the part of the DNA. This part or this segment of the DNA is transcribed. This is the open or unwind portion of the DNA, and this unwinding is again done by the RNA polymerase. RNA polymerase ने unwinding की है, DNA separate strands separate हो गए हैं, and one strand which is the coding, this template strand is work as a template. ये जो template strand है ये
काम करेगा और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा. नाउ हाउ दिस हैपेंस, कैसे ये प्रोसेस हो रही है. अब हम बात कर रहे हैं इलोंगेशन, यानी कि कैसे प्रोसेस आगे स्टार्ट होगी. फॉर इन द mRNA synthesis, now the complementary nucleotides comes and they will join with this particular site. यहाँ पे आएंगे, पोज हमने यहाँ पे ना ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई है, that part where the double stranded DNA get separated. नीचे वाला पार्ट that is the template strand. This is the template strand. अगर हम देखें टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है. When the mRNA is formed, then what happens? The ribonucleotides come and they will join according to this complementary sequence. इस complementary sequence के according ribonucleotides attach होंगे. G के complementary, C के complementary G, G के complementary C, then add thymine. In place of thymine, the adenine. Thymine के साथ यहाँ पे आ जाएगा uracil, and then adenine, and then again the uracil. So in this sequence, the ribonucleotides will come and they will join to make a complementary strand of the mRNA according to this template strand. This process is known as elongation. So elongation will done जैसे जैसे segments एक part DNA का RNA बनाता जाएगा, ये RNA polymerase आगे की तरफ मूव करता जाएगा. It will move further. First parts RNA बना, then it will move further, then it will move further, and then open, unwind, and make the RNA according to the strands, according to the nitrogenous base. तो इस तरीके से प्रोसेस जो होगी वो elongate होती रहेगी, चेन elongation होता रहेगा. धीरे धीरे करते हुए ये mRNA जो है साइज में इंक्रीज होता रहेगा. लाइक यहाँ पे इतना mRNA हमने दिखाया है, that will form. Later on the large size mRNA will be formed as this complete part is means transcribed. जैसे ये पूरा इतना टेम्पलेट पार्ट जो होगा ट्रांसक्राइब हो जाएगा, देन mRNA बनता रहेगा. और जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है ना, आप देख सकते हो कि फिर से पीछे का जो सेगमेंट है, पीछे का जो पार्ट RNA को, इट विल जॉइन अगेन, इट विल रीजॉइन, इट बिकम द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सिर्फ वही सेगमेंट ओपन किया जाता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन करना है, नॉट द कंप्लीट डीएनए सेगमेंट गेट अनवाइंड. बाकी सब बाइंडेड है, सिर्फ ये सेगमेंट अनवाइंड है जहां पे आरएनए पॉलीमरेशन हो रहा है, आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है. एंड व्हेन दिस आरएनए पॉलीमरेज विल मूव फर्दर, दिस पार्ट विल अगेन रीजॉइन, फिर से डबल हेलिक्स बना लेगा और आगे के पार्ट पे फिर उसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा. सो हियर इन दिस वे वी कैन से दैट चेन इलोंगेशन हैपन. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द चेन इज टू बी टर्मिनेट. एंड द टर्मिनेशन पॉइंट, जब टर्मिनेशन पॉइंट आता है, व्हेन this RNA polymer reached at the terminator site, promoter site से शुरू हुआ था, when it reached the terminator site, at terminator site the one factor which is rho factor will come and it will join with the RNA polymerase. At the terminator site the rho factor will come and it joins with the RNA polymerase, and after joining it will release the RNA polymerase. सब कुछ यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा. This rho factor RNA polymerase के साथ बाइंड हुआ, RNA polymerase will separate from this transcription unit, यहाँ से separate हो जाएगा. And this newly synthesized RNA, this newly synthesized mRNA, this is the mRNA. This mRNA also gets separated. It will also get separated, and RNA polymerase is also separated. ये भी separate हो जाएगा. Only the DNA, double helical DNA, will remain as it is. So in this way the chain gets terminated. And the termination के लिए responsible factor जो है, that is the rho factor. So after the termination, this mRNA which is formed, this mRNA is let's see how in which direction this mRNA is forming. This mRNA is forming in the 5' to 3' direction. 5' to 3' direction में mRNA का synthesis हो रहा होता है. Reason क्या है? The coding strand is in the direction of 5' to 3'. Whereas the template strand is 3' to 5'. template strand के अकॉर्डिंग नया mRNA बन रहा है, तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5' to 3'. So this is also important thing. इसे हम एक बार यहाँ लिखते हैं कि किसकी पोलैरिटी क्या है, ताकि आपको ये याद रहे. ये आपको याद रखना है. कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड इज 5' to 3'. template is, or template strand is 3' to 5'.
and the new mRNA जो बन रहा है, जो RNA बना है, it will synthesize in the direction of 5 prime to 3 prime because it is formed onto the template strand and it should have opposite polarity, तो polarity opposite होगी, ये बनेगा 5 prime to 3 prime. So this is about the RNA. This RNA get formed. Here we discussed about the complete transcription process. When we compare both these two processes in the prokaryotic and eukaryotic, there are some differences. So let's see what are the differences between prokaryotic and eukaryotic cells. As you can see that in the prokaryotic cells this process happened, RNA is get formed and this RNA which is the mRNA, this mRNA which is formed after the transcription process, this is a ready RNA. ये ready है, यहाँ पे इसके साथ कोई भी processing की जरूरत नहीं होती and this process happens in the cytoplasm in the case of prokaryotic cell. This transcription process, it happens in the cytoplasm in prokaryotic cells because there is no differentiation between cytoplasm and nucleus. दोनों चीजें सेम ही है, दोनों ही साइटोप्लाज्म में है, तो ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही हो रही है और आरएनए भी रेडी है. सो दिस आरएनए डायरेक्टली टेक पास इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस विदाउट एनी प्रोसेसिंग. डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है. इवन प्रोटीन सिंथेसिस तो इतना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, हम कहें कि जब तक यहाँ से टर्मिनेट नहीं होगा, जब तक टर्मिनेशन नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन का, एमआरएनए अलग नहीं हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से, साथ साथ इसका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है prokaryotic cell में. See what are the complexities that are found in the eukaryotic transcription. Eukaryotic transcription की अगर हम बात करें, the first thing जो हमें देखने को मिल रही है that this process happens in the nucleus. Transcription in the eukaryotic cells, it happens in the nucleus. Nucleus में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है and this transcription is formed a RNA which is known as HNRNA. तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन से RNA बनता है उसे हम HNRNA बोलते हैं, heterogeneous nuclear RNA, because this RNA has some coding and non-coding regions. Like let's draw the structure of RNA. This is the structure of RNA. In this structure, it has some coding region and some non-coding region. We are marked this non-coding region by red color. These red colors are region जो है, these are the non-coding regions and they are known as introns. They are intron. So it has introns and it has exons. कुछ रीजन होंगे जो कोडिंग होंगे और कुछ रीजन होंगे जो नॉन कोडिंग होंगे. तो ये जो एचआरएनए बन रहा है जिसमें दोनों ही तरीके के रीजन है, दिस एचआरएनए नीड टू बी प्रोसेस्ड. इस पे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है एंड कैसे ही प्रोसेसिंग होगी ये हम देखते हैं. फॉर द प्रोसेसिंग द फर्स्ट थिंग दैट इज डन इज दीज exon and introns. These introns, these non-coding regions are spliced from this coding regions. तो इन्हें सेपरेट कर दिया जाता है, इन्हें कट कर दिया जाएगा. तो जितने भी नॉन कोडिंग रीजन्स है, ये जो इंट्रॉन्स है, इनका सेपरेशन होने के बाद हमें मिलता है एक कंटिन्यूस इंट्रॉन कैरिंग दिस एक्सॉन कैरिंग रीजन. दे हैव ओनली एक्सॉन्स. तो सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे. दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्प्लाइसिंग. इसे हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग. तो फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे हो रही है एचएनआरएनए के अंदर वो है स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग होगी एंड बाय दिस स्प्लाइसिंग द नॉन कोडिंग रीजन्स दैट आर द इंट्रॉन्स दे आर स्प्लाइस्ड ऑफ एंड इन्हें स्प्लाइस कर दिया जाएगा, इन्हें रिमूव कर दिया जाएगा. एंड दिस स्प्लाइसिंग इज डन बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट आर नोन एज स्प्लाइसोसोम्स. तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही है. सेकेंड थिंग जो होती है यहाँ पे, ये जो एचआरएनए बना है इट इज नॉट फॉर्म मेच्योर. अभी तक मेच्योर नहीं होगा, अभी तक ये एमआरएनए नहीं कहला रहा. अभी कुछ और चीजें भी हैं जो इनके साथ ऐड होनी है. दैट फर्स्ट थिंग दैट अनदर थिंग दैट विल हैपन हियर इज द कैपिंग. इट नीड टू बी कैपिंग. इन द कैपिंग व्हाट हैपेंस, the unusual residue that is the methylated guanosine triphosphate is added at the 5 prime end of this HRNA. Like ये 5 prime end है and this one is the 3 prime end. We know that mRNA is always formed from 5 to 3 prime end direction. So at the 5 prime end, the methylated guanosine triphosphate residues are added at the 5 prime end. तो यहाँ पे क्या होगा, इसके 5 प्राइम एंड पे ये रेजिड्यूज अटैच हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिंग. दिस अटैचमेंट ऑफ methylated guanosine triphosphate is known as capping, which is done at the 5 prime end.
After the capping, the another thing is also done. It's also happened, that is known as tailing. In the tailing, what is done? Next is tailing the polyadenylated residues, या और we can say that polyadenine residues जो होते हैं, बहुत सारे adenine residue जो होंगे वो 3 प्राइम एंड पे ऐड किए जाते हैं HNRNA पे, and this is known as poly-A tail. This structure is known as poly-A tail because बहुत सारे adenine residues हैं and they are attached at the 3 prime end of HNRNA. It's known as poly-A tail. After that, we can say that this HNRNA is converted into the mature mRNA. क्या क्या हुआ है? HRNA जो कि यूकैरियोटिक सेल में बना है, ये यूकैरियोटिक सेल में बना हुआ HNRNA या हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकता। तो पहले इस पे कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग में सबसे पहले स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है? एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, दो इंटरप्टेड रीजन से इंट्रॉन से एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग रीजन्स and exons are the coding regions. These non-coding regions are separated. इन्हें separate कर दिया जाएगा so that continuous exons will remain there. Okay, this is splicing, and with this splicing, another two things are also happen, which is capping and tailing, so that this RNA can be protected. इनकी protection भी हो सके. In the capping, the methylated guanosine triphosphates residues are attached at the 5 prime end of this HNRNA for the capping, and for the tailing, many adenylated residue 200 to 300 adenine residues are attached at this 3 prime end. This is known as poly-A tail. So after that, this HRNA is known as mRNA or messenger RNA. Now this mature messenger RNA is transported or transferred from nucleus to cytoplasm so that it can take part into the next process, which is translation. So this is the difference. Another difference which we have already seen is about the RNA polymerase. In the case of prokaryotic, only one RNA polymerase is responsible for the synthesis of all type of RNAs, whereas eukaryotic cells में जो है RNA polymerase वो 3 types के हैं और तीनों RNA polymerase अलग अलग तरीके के RNA का synthesis करते हैं या फिर उनकी transcription करते हैं. So here we discussed the complete process of the transcription, and we discussed the differences between prokaryotic and eukaryotic transcription also. I hope you are able to understand it. In the next video, we'll discuss about the genetic codes.